हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो आंसर की है इंग्लिश पेपर 1 का बीए ऑनर्स पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2020 सेशन 2019 टू 2022 बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, यानी अभी तक कोई भी ऑफिशियल आंसर की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हो पाया है। So the first question is, who was the first English printer? The correct answer is C. William Caxton. Second, in which year printing was started for the first time in England? A. 1476. 3. Which period of English literature is referred to as the Caroline period? C. 1625 to 1649. 4. What is the chronological order in which the Renaissance touched the following European countries? Option B. Italy, France, England. 5. Who introduced the English form, the sonnet form in English for the first time? Option C. Sir Thomas Yatt, YATT. 6. Which is true about the form of Shakespearean sonnet? A. It has three quatrains and a couplet. 7. Which is considered to be the first tragedy in English? C. Gorboduc. 8. Which of the following plays by Marlowe has focus on internal as against external struggle? A. Edward II. 9. 12th Night is a romantic comedy was written by William Shakespeare. 10. How many Shakespearean sonnets are addressed to Mr. W.H.? तो शेक्सपियर टोटल 154 सोनेट लिखे और इसमें सोनेट फर्स्ट से लेके 126 तक इन्होंने मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेट किया और 26 के बाद इन्होंने एक ब्लैक लेडी उनको डेडिकेट किया। 11 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सोनेट शेक्सपियर हैव्स रिटन, तो ऑप्शन ए 154। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एम्प्लॉयड बाय चॉसर इन द कैंटरबरी टेल, so correct answer is B, iambic pentameter. 13. How many pilgrims figures in the Canterbury Tales? इसमें total 30 pilgrims है, तो option C. 14. Who wrote the famous tragedy play The Duchess of Malfi? Option B, John Webster. 15. The age of Pope is called, option B, the Augustan age. 16. Pope's An Essay on Man is C, a poem. Daniel Defoe wrote, ऑप्शन डी रॉबिन्सन क्रूसो, ये एक नॉवेल है, काफी फेमस है डैनियल डिफो का। 18. व्हेन वर टी.एस. एलियट अवार्डेड द यूएस मेडल फॉर फ्रीडम, इनको 1964 में मेडल मिलता है, यूएस मेडल फॉर फ्रीडम, तो ऑप्शन डी। 19. व्हेन वाज एलियट्स द कॉकटेल पार्टी पब्लिश्ड, ये पब्लिश होता है सी यानी 1949 में। Which novel of Rudyard Kipling makes use of many of his childhood memories of India? Option A, Kim. 21. Dickens' novel Hard Times deal with the life of C, एक circus child. 22. Dickens' novel A Tale of Two Cities is set against the background of A, French Revolution. 23. Which character by Dickens is always willing? Option B, Barkis. 24. When did Dickens die? B, 1870. 25. Uriah Heep is a character of which of the novel of Charles Dickens? Option D, David Copperfield. 26. Man and Superman, written by G.B. Shaw, is based on the philosophical doctrine of, option D, Nietzsche. 27. Which novel of D.H. Lawrence was banned? Option C, The Rainbow. 28. Which of these writers were awarded the Nobel Prize? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सभी को नोबेल प्राइज मिला, इसमें टी.एस. एलियट को भी मिला, जॉन गैल्स वर्दी को भी मिला और जी.बी. शॉ को भी मिला। 29. विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड वर्क इज बाय टी.एस. एलियट? ऑप्शन डी, लिटिल गिडिंग। 30. Shaw's play Arms and Man contains a satire on love and, option C, war. 31. In the room women come and go, talking to Michael Angelo. From which poem of T.S. Eliot has line been quoted? ये लिया गया है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, यानी ऑप्शन बी। 32. विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्ले बाय बर्नार्ड शॉ? सो ऑप्शन डी, द स्किन गेम, ये जॉन गैल्सवर्दी का प्ले है। 33. विच मैगजीन डिड टी.एस. एलियट एडिटेड? ऑप्शन सी, द क्रिटेरियन, काफी फेमस मैगजीन था ये। 34. Eliot's The Waste Land concludes with the word of which language?
ये कंक्लूड होता है संस्कृत से। 35 हाउ मेनी सेक्शंस डज द वेस्टलैंड हैव? वेस्टलैंड में टोटल 5 सेक्शन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 36 विच टू टेल्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स आर इन प्रोज? कैंटरबरी टेल में बहुत सारे टेल्स है, तो इसमें दो टेल ऐसा है जो प्रोज में है, तो वो है ऑप्शन सी द टेल ऑफ मेलेवी एंड द पार्शंस टेल्स। 37 द वार ऑफ द रोजेस फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ? ये सबसे ज्यादा फिगर होता है शेक्सपियर के वर्क्स में। 38 व्हाट इज द इसेंस ऑफ डिकेंस वर्क? इसका ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। 39 विच वर्क इज नॉट ए पोएम बाय टी.एस. एलियट? ऑप्शन बी द कॉकटेल पार्टी, ये एक प्ले है। 40 which one is a war story by Rudyard Kipling? Option C a Madonna of the Trenches। 41 Chaucer's poetry reflects real life? Option A। 42 what was the span of the second period of the middle English literature? So option C 1350 to 1450। 43 which of the following of G.B. Shaw was prescribed because of its portrayal of sexual exploitation? Option B Mrs. Warren's Profession। 48 44 the the quintessence of Ibsenism was written by G.B. Shaw। Option C। 45 the Oxford movement is also known as A High Church movement। 46 which one is the longest tale in the Canterbury Tales? Option D the Knights। 47 who translated the Bible into English? So option C John Wycliffe। 48 Ruskin's Sesame and Lily is about? Option D both, B और C इसका दोनों होगा, so option D is the correct answer। 49 the Renaissance was? Option A literary movement। 50 the Reformation was? Option B a religious movement। 51 from where did the Renaissance come first? तो it come जो ये आता है पहले वो इटली से आता है। 52 the Reformation was a revolt against a pope in Thyrsis Matthew Ardle Moss on the untimely death of Arthur Hugh Clough। Option C। 54 which version of the Bible did John Wycliffe make use for the translation? तो पहले का जो बाइबल था वो लैटिन में था और उसके बाद जॉन विक्लिफ लैटिन से इसको जो मिडिल इंग्लिश था उसमें इसको ये ट्रांसलेट करते हैं। 55 according to Arnold what is lacking in Chaucer? तो ऑप्शन ए हाई सीरियसनेस। 56 who called Chaucer the father of English poetry? तो ये इसमें जो भी ऑप्शन है वो रॉन्ग है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जॉन ड्राइडन होगा। 57 द एज ऑफ जॉन ड्राइडन इज नोन एज द एज ऑफ रिस्टोरेशन बिकॉज सी चार्ल्स सेकेंड एज वेल एज monarchy was restored। 58 in the broadest sense the Puritan movement is regarded as? Option B a religious movement। 59 who called the 18th century the age of prose and reason? Option B Matthew Arnold। 60 Rudyard Kipling was awarded the Nobel Prize in the year 1907। 61 Andrew Marvell wrote रिलीजियस पोएम डैश रिलीजियस पोएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आई थिंक ये सी होना चाहिए दो, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 3 रिलीजियस पोएम लिखा जिसमें द गार्डन, द कॉर्नेट और द बारमूडा। बारमूडा जो ट्रायंगल है उस पे बेस्ड है और इसमें ये भी बाइब्लिकल थीम पे बेस्ड है, सो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। 62 हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? ऑप्शन ए जॉन विक्लिफ। 63 द एज ऑफ रोमांटिसिज्म was from 1800 to 1850। 64 who defines romanticism at addition of a strangeness of beauty? Walter Peter। Option B। 65 who is the hero of Great Expectation? तो Pip। 66 the love song of J. Alfred Prufrock is? D a dramatic monologue। 67 Hippopotamus a poem by T.S. Eliot is a satire on? Option B the church। 68 Sohrab and Rustam is a very well-known narrative poem of love and mistaken identity by which poet? Option B Matthew Arnold। 69 which is Marlowe's last play? Option B Edward II।
17 70. Who has defined poetry as a criticism of life? Option C. Matthew Arnold. 71. The White Devil is a famous tragedy written by John Webster. Option B. 72. Whose works are known as fictional biographies? So option A. Dickens. 73. The dramatist who did not introduce any villain in his play. Option A. G.B. Shaw. 74. The author of the modern painters is option B. John Ruskin. 75. Whose opinion is this? Poetry is the most highly organized form of intellectual activities. Option C. T.S. Eliot. 76. Practical criticism. Option A. An art of making personal opinion and judgment about a piece of literature. 77. The word précis is a French word. Option C. 78. Précis means option B. A summary. 79. The précis must be option A. In indirect form and past tense. 80. The précis must not exceed dash of the length of the original passage. So option C, 1/3. 81. Which is known as also known as age of discovery. So option A, Renaissance. 82. Iambic foot consists of A, an unstressed syllable followed by a stressed. 83. Keen as are the arrow of that silver spear whose intense lamp narrows in the white down clear. The rhyme scheme of this stanza is option A, A, B, A, B. 84. I saw eternity of the other night like a great ring of pure endless light. Which figure of speech is seen in this line? Option B, simile. 85. Love is not time's fool, though rosy lips and cheeks. Within his blending shackles compass come. Which figure of speech is seen in this line? Option B, personification. 86. Stanza is option A, an Italian word meaning an arrangement of line in verse. 87. Quatrain is a stanza of option C, 4 lines. 88. Style is the man himself who said this. Option A, Buffon. 89. Blank verse is option B, unrhymed verse written in iambic pentameter. 90. Behold her, single in the field, you solitary highland lash. Which figure of speech in this line? So the correct answer is C apostrophe. 91. The word criticism is derived from option B, Greek word kritikos, जिसका मतलब होता है जजमेंट करना. 92. Couplet is option A, two-line stanza. 93. Romanticism is a revolt against neoclassicism. यानी जो रोमांटिसिज्म था, रोमांटिक पोएट थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शाउदे, पीवी शैली, ये सब रिवोल्ट के किसके अगेंस्ट? न्यू क्लासिकल जो राइटर थे लाइक अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, इसके अगेंस्ट ये एक रिवोल्ट था. 94. एलजी is a mournful poem. Option A. 95. Who was Sophocles? So Sophocles was a Greek tragedian. 96. When did Oxford movement start? So it started in 1830s. Option B. 97. The Pre-Raphaelite Brotherhood was a group of painters, poets, and critics. Option A is the correct answer. 98. Who coined the term metaphysical poetry first? So the correct answer is C, Samuel Johnson. 99. The university, which is a group of option B, English playwright educated in the university. ये वैसे स्कॉलर थे जो या तो ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज से एजुकेटेड थे और ये सारे प्ले राइट हुए. 100. Surrealism was a option C, cultural movement. So ये था पेपर 1 का अनऑफिशियल आंसर की. आप इसके सहायता से आप अपना क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर.